and in that moment मैंने तो मेरे सारे प्रेयर्स बोल रही है, मुझे पता चल गया था मेरी टिकट कट गई अभी. I mean, 21 people died at the base camp and some 70 were injured badly. Welcome to Inspiring Explorers, and this is your host Minakshi, also known as My Boho Voyage. This time on Inspiring Explorers, we have an inspiring explorer who is the world's first vegan to scale Everest twice. Once following a complete vegan diet, and second time using 100% cruelty free gear as well. This vegan superhero is none other than Kuntal Joyshaw. From being a normal software engineer to turning into a vegan champion, dementia awareness advocate, and a humanitarian inspiration, Kuntal Joysher is a vegan superhero and an inspiration to many. Kuntal Joysher is not only a passionate mountaineer, but also a very amazing adventure photographer. Dig in this episode to listen to this funny, inspiring, and insightful conversation with the vegan superhero Kuntal Joysher. I'm Meenakshi Srivastava, your host for Inspiring Explorers, and I welcome you to the show Inspiring Explorers. Each week, I'll be interviewing some of the most successful personalities who will share with us their inspiring life journeys and some of the interesting travel experiences that are not limited to sightseeing. Guys, make sure you share this episode with your friends. Please do subscribe, follow, give a 5-star rating, and hopefully a review. And also don't forget to come say hi to me on Instagram at the rate mybohovoyage. Now, before I start this episode, let me inform you that we recorded this interview during the COVID-19 lockdown, and hence the recording was done remotely. We were both sitting in our houses and recorded it online. So please don't mind the background noises, and I hope you still enjoy it. So without any further delay, let me welcome the one and only vegan superhero of India, Kuntal Joyshaw. Okay, wonderful. There's an Everest at the background. It is not Everest because I'm standing on top of Everest. So it is the view that you get from top of Everest. Oh, wow. Okay. Yeah. Okay, so this is the view that we get from the top of the Everest. Indeed. Wonderful. Okay. So welcome to Inspiring Explorers, Kuntal. So excited to see you and have you here. Yes, super happy to be here as well and look forward to sharing my journey. Thank you so much. Thank you so much, Kuntal. So excited to see you. Kuntal, you are a software engineer. You were residing in California, USA. So you were in California and then you decide to suddenly, climb Everest, being a software engineer, and then climb Everest, that too being a vegan and in a vegan gear. So proving engineers kuch bhi kar sakte hai. How did that thought come in your head? Right. So first of all, of course, I was living in Los Angeles for about 6 years. And then I moved to Mumbai, back where I have lived practically for all my life. And it was mostly to sort of take care of my father, who was diagnosed with a disease called LBD, which is Lewy body dementia. And he had lost pretty much all his independence, and my mother was only his sole sort of caregiver. And I wanted to sort of share that responsibility. So I decided, hey, I've gone to the US, I've done my master's degree, I've gotten a fair bit of experience. This is what I had always thought. I didn't want to live in the US anyway. So it's a good time to go back, take care of my parents. So I came back, and then just like a typical Gujarati family, there was a whole bunch of pressure, get married and da 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 da. And look, I before I found Everest, or before I found my love for the mountains, I was this regular software engineer, the guy next door. So I was doing regular things. I was not like traveling or climbing mountains. My life was just boring, yet another life, and nothing wrong with that. But that is who I was. And I got married and life went on. Didn't have any complaints. I was making fair bit of money. I was working for a Los Angeles based company, so I was still making a US salary, and things were pretty good actually. And once you get married, you want to go on vacations, you want to see places. That's what couples do. So just like any touristy couple, we also decided, hey, what should our next vacation be? And then we sort of zeroed in on Shimla, and especially in the winters, because you thought, hey, it's close by. In the sense, from Mumbai I can take a flight to Chandigarh, and then from there just drive like 4 or 5 hours and I would be in Shimla.
So we thought, great. And we'll get to see snow, something that I could have never seen in Mumbai. So I'm like, okay. My wife had never seen snow in her entire life. And for me, it had been like since I was a kid and I'd gone to Manali, I had seen snow back then. So decades before I had seen snow. So both of us went to Shimla, one hope seeing some snow. We were typical touristy couple, so I will be very upfront about that. And for the first 6 7 days, we went to all these places, Kufri and Fagu and X and Y and all these typical places. We did not see anything, and we were living in this hotel, and the heater was broken, and we were miserable tourists basically. I mean, if when I look back upon my life back then, I'm like, why was I upset? Cold is great, and back then I was like super. I'm like, क्या परेशानी है मेरे रूम में, गर्मी है इतनी और गर्म पानी भी नहीं दे रहे, क्या वेकेशन पे आ गए हम लोग. एंड दैट्स द काइंड ऑफ टूरिस्ट आई वाज. So anyway, last day we are going through the market of Shimla and this guy tells us, मैं आपको snow दिखाऊंगा. मुझे एक रिपोर्ट मिला है कि नारकंदा के बाजू में snow है. So I'm like, चलो फिर भाई. And so we took his Zen and we went to Narkanda. And then he says, नारकंदा पहुंचे, एक ढाबे के बाजू में खड़े थे. Like, ये देखो इतना सारा snow. एंड वी वर लाइक, भाई हमें स्नो को टच करना है, ये क्या बाहर दूर की पीक बता के ये इतना सारा स्नो, घर पे ही बैठ के देख लेते थे हम तो, बॉम्बे में, यहाँ सही क्यों आए बात फिर. है. तो ही इज लाइक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक छोटा हाटू माता का मंदिर है एंड वो जनरली विंटर में उसके बाजू में बहुत स्नो होता है. सो वी लाइक, ओके लेट्स गो ड्राइव टू हाटू माता टेम्पल. सो वी स्टार्ट ड्राइविंग एंड अबाउट half a kilometer or I think kilometer into the drive, there's just too much snow already on the road. It's like an 8 kilometer drive, but हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उसका zen है और वो zen चलने नहीं वाला है उतने स्नो पे. And he's like, अभी सर आपको तो स्नो ही देखना था, just go enjoy your time, let's get out of here now. So both Dipti, my wife, and I, we went into the snow and snowball बनाए, फेंके एक दूसरे पे. We are like enjoying our time. हम जो करने आए थे वो कर लिया. So लाइक बड़ा चेक मार्क लग गया था हमारे लाइफ में कि हमने स्नो देख लिया अभी. एंड बट आई डोंट नो, समथिंग क्लिक्ड एंड आई टोल्ड दीप्ति, यार थोड़ा और आगे जाना चाहिए. एंड देयर वाज नो वन. ओके, वी वर लिटरली द ओनली ह्यूमन बीइंग्स, मैं, दीप्ति और मेरा ड्राइवर और उसकी जेन. लाइक हम इतने ही लोग थे, बाकी कोई नहीं था. सो ड्राइवर ने बोला कि यार मैं जेन के बाजू में रुकता हूँ, मतलब यहाँ कोई है नहीं, आप थोड़ा आगे घूम फिर के आ जाओ. So Dipti and I started walking and कैसे टाइम निकला ना समझ में नहीं आया. 1 hour, 2 hours, 3 hours. ड्राइवर को भी कुछ बताया नहीं क्योंकि उस टाइम पे तो सेल फोन और वो सब का मतलब इतना कुछ था भी नहीं. हमारे पास तो सेल फोन भी नहीं था तभी. तो मतलब ड्राइवर को फोन करके बताओ कि यार हम जा रहे हैं आगे, ऐसा कुछ नहीं था. वी जस्ट took off and it was just a, see, Hatu Peak, if you just want to get to the top of the temple, there's a proper drivable road. So we were just following the road and we kept walking in the snow. And मतलब इतना पीसफुल था ना. एंड इन एट द एंड ऑफ 4 hours we were like, by around lunch time we were on top of the Hatumada temple. And मतलब this, to me, this was like the turning point of my life. To be, since you asked कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से यहाँ पहुंच गए, this definitely was the turning point of my life. And it was so quiet on top of that temple. It was so peaceful. I truly like felt alive in that moment. मतलब मैं, दीप्ति वहां बैठे थे और एक बड़ा भूतिया डॉग भी हमारे साथ, he had accompanied us to the top of that temple and he was like right next to us. And मतलब miles and miles तक कोई human being नहीं, just two of us and that dog. And it was like an incredible experience. I mean, for like, कैसा था वो moment, अगर मैं freeze करूँ तो I was able to exist in that moment rather than जब भी हम सिटी में होते तो constantly planning in the future and pondering over mistakes in the past, and वही चलता रहता है उसमें. present तो सामने से निकलता ही जा रहा है. You're not even able to do anything about it. So in this moment, like मतलब सब वक्त ठहर गया और you're just in the present, you're enjoying the present. And to me, I thought, I want to feel like this for the rest of my life. Not that I wanted to climb mountains. As a Gujarati guy, climbing mountains was the last thing on my mind. But I wanted to feel that. When I thought that as a passionate software engineer, maybe now that I've felt something that I've never felt in my entire life, a special feeling,
I would feel the same thing when I write software or when I build the company or when I do something challenging. And we came back home and I went to my work and I did not feel anything like that for my work at all. मतलब वो feeling आई नहीं. And that's where I thought यार मतलब क्या हो गया. Okay, 2-3 दिन मैंने try किया. It's not something that you can force that अच्छा अभी मैं software बना रहा हूँ अरे मैं वो feeling के लिए wait कर रहा हूँ. That doesn't happen that way. True. So then I said यार let's go, maybe try again, maybe go to the mountains again. Let's take a risk. क्या ज़्यादा ज़्यादा नहीं feel होगा वैसा. ठीक है ना, we'll keep doing something or the other. Maybe someday I will feel like this again. Yeah. And so I went back to the mountains, and again it was sort of a weekend trip. मतलब उत्तराखंड पहुंच गया फ्लाइट लेके, फ्राइडे नाइट को दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से बस लेके हरिद्वार पहुंच गए, वहां से जीप लेके किसी बेस विलेज में पहुंच गए, 2 दिन हाइक करके वापस आ गए. मतलब वैसा थोड़ा प्लानिंग किया एंड Yeah. पहुंच गया. एंड exactly the same feeling when I reached the top of the mountain. Exactly the same feeling. Not just when I reached the top of a mountain, but like throughout the whole thing. Yeah. And I just kept repeating this over and over and over again. Like I went on these weekend trips, and I even the next vacation we took, we went to Manali and we went on a trek again, and we did Triun trek, and we did so many, like we just kept, like we went to Uttarakhand in the winters for 6 days. We did Tunganath and Chopta, and again these were all very small treks, but I was like sort of madly and deeply falling in love with the mountains. Like that journey had already sort of begun. Yeah. And anyone who's like so much into the mountains all the time will at some point think about Everest. Everest is the tallest mountain of the world at the end of the day. Yeah. And so I also had that thought, यार एवरेस्ट यार एक बार मुझे एवरेस्ट देखना है. ऐसा नहीं कि आई वांट टू क्लाइंब. वो तो इतने छोटे ट्रेकर से सडनली एवरेस्ट क्लाइंब करना would be like a gigantic jump, and I was not Exactly. even thinking about it, but I thought, yeah, Everest dekh to sakta hu. I've done enough treks that I understand what trekking is about, and that the whole experience would be really fruitful, I think, Yeah. to just like ऐसे देखा है एक बार एवरेस्ट को जिंदगी में, like up close देखा, ऐसे नहीं कि कहीं फोटो में देखा या बुक्स में देखा या Exactly. So I signed up for an Everest base camp trip. This was somewhere around, I think, March of 2010. February Okay. 2009 was when I went to Hatu Peak, and then about a year later, I signed up for Everest base camp hike Yeah. and prepared for 6 months, and then finally showed up in Kathmandu in October of 2010, and then took this small flight to Lukla, which is also one of the most dangerous airports in the world. फिर Okay. वहां से हम 10 days का ट्रैक करके, आई थिंक, like Indian Himalayas don't, like, I mean, nothing against Indian Himalayas. I absolutely love Indian Himalayas, but once you are in the Everest Valley, the size and the majesticness of the mountains just becomes exponential. मतलब it's just at next level. उतना मतलब मैंने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था मेरी जिंदगी में कि इतना जाइगेंटिक हो जाएगा सब कुछ और मैं इतना क्लोज हो जाऊंगा सब चीज से. So it was just a different experience altogether, walking through the Everest Valley and then reaching Everest Base Camp. But the biggest problem of reaching Everest Base Camp was, now Everest Base Camp पहुंचे, वहां से एवरेस्ट ही नहीं दिख रहा है. अच्छा. I'm like, यार इतना ट्रिप करके आए यार, इतना सब 1.5 साल से पूरा प्लानिंग ट्रेनिंग, and you get to the base camp, it's like an anti climax. तुम्हें पीक ही देखने नहीं मिल रहा है, बाकी सब पीक दिख रहे हैं पर एवरेस्ट नहीं दिख रहा है. एवरेस्ट नहीं दिख रहा है. So luckily हमारे एक्सपीडिशन लीडर ने एक साइड ट्रिप सेटअप किया था, where we went to this place called Pumori Base Camp. No one, literally अगर समझो 30,000 लोग एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं ना एक साल में, तो like 10 जन गिन के ना पुमोरी बेस कैंप जाते. Okay. Like literally no one goes to Pumori Base Camp. ठीक है, तो हमारे ट्रिप में वो सेटअप था, तो हम Pumori Base Camp गए, and Pumori Base Camp offers some of, I personally think, some of the most spectacular views of Everest ever. तो we reached the Pumori Base Camp, and हम डाइनिंग टेंट में है वहाँ बेस कैंप के, बिकॉज हमें रात को रुकना है, तो थोड़ा प्रॉपर सेटअप है वहाँ, जहाँ हमारे खुद के इंडिविजुअल स्लीपिंग टेंट्स है, किचन टेंट है, एंड एक छोटा डाइनिंग टेंट है. Yeah. So
we were sleeping the night there, and we had, in the evening, we had all gathered in the dining tent and just enjoying our time. And तभी एक शेरपा मेरा नाम चिल्ला रहा था बाहर, and इन द माउंटेन्स कोई नाम चिल्ला रहा है, मतलब समथिंग, कुछ गड़बड़ हो गया है. तो मेरे माइंड में वो था, मैं बाहर भाग के गया, एंड आई एम लाइक, बॉस क्या हुआ? एंड ही इज लाइक, सर आप जरा एवरेस्ट को देखो. So I turned around and I saw Everest, and believe me, I think that I have said this story like 1,000 times now, but every time I see this story, वो पूरा picture मेरे mind में आ जाता है. And it's like last rays of sunset were falling on Everest, and Everest बीच में है, ठीक है, सारी पीक आजू बाजू में ग्रे ब्लू कलर की हो गई, बट इन द मिडल एवरेस्ट, that black rock of snow and ice and a lot of rock, that was like shining golden, जैसे किसी ने पूरे स्नो पे आग लगा दी हो. एंड लाइक वो, मतलब बीच में गोल्डन है, बाकी सब कुछ व्हाइट है. मतलब इट वाज a photo out of one of the best postcards in the world probably. And when I saw Everest that way, for me it was like love at first sight. I'm like, boss, this is it. I have found the calling of my life. I have found the dream of my life. And as much impossible as it seems right now, standing here looking at Everest, I am going to come back one day and I'm going to reach the top of this mountain. So sort of that's where the journey began, or that first concrete thought that I'm going to climb this mountain no matter what. मतलब कभी कभी ऐसे मन में आ जाता था उसके पहले भी, यार मे भी एक बार चढ़ लेते यार एवरेस्ट. मतलब I didn't even know what it would take to climb Everest, but Yeah. seeing that moment, that was it. That like completely sealed the deal for me. I'm like, this is it. अभी मेरा journey शुरू हो रहा है, ये life का next पड़ाव शुरू हो रहा है अभी. So in that sense, it was October 2010 when I truly found my dream, and then I began the journey to sort of reach the top of Everest. Wow, that's like, I can see still you're so excited sharing this story, even though talking so much about it. I've seen a lot of interviews where you have talked about all of this, but the energy is still the same. It's not like कि अभी धीमा हो गया, नहीं, अभी भी it's still जोश है. Because Right. it's Everest. It Yeah. is Everest, yes. Yeah. So I also saw that photograph on your Instagram, that the ray of sun falling, and I think you captured it, that moment, final moment when the So sun कैसा falling. था ना कि that guy, that Sherpa, was shouting my name because I was a team photographer, and he wanted me to Okay. take the picture of that scene. तो इसलिए मुझे मेरा नाम Okay. चिल्ला रहा है. So of Okay. course then I went out, and of course, mind में बहुत सारे thoughts थे, but वो photo भी खींचना था. So I'm like, before the sunlight, the golden hour disappears, let's just set up my tripod, take that shot, ensure मतलब अच्छे से shot मिला. And the funny thing is that happens every evening. Yeah. That happens all the time. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई out of the blue का thing था. It happens every evening there. So after that, I see so many sunsets happening on Everest from so many angles, from so many places. It's amazing. And it's so surprising that people मतलब like vacation पे गए, but ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते कभी कभी. Like Exactly. बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की ट्राई करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट एक सिंपल सनसेट यार, एंजॉय कर लो Exactly. यार. इतना सुपर Exactly. सनसेट कहाँ मिलेगा देखने को. True. When आप तो एवरेस्ट की बात कर रहे हो, वी वेंट टू कंचनजंगा, लाइक दार्जिलिंग. तो राइट. the plan was to wake up early and watch the sunrise. So like usually I'm an engineer, so like रात में ज़्यादा जगना होता है, सुबह नहीं होता है. So but when I'm traveling, I'm like excited, like you are excited for Everest. Like I'll not sleep at all. तो 2 बजे रात के I'm jumping on the bed, waking up my parents की ना, चलो रेडी होना है, जल्दी रेडी होना है. और फिर वहां जाके पूरा एक्साइटमेंट, वहां गए और उसने छोड़ दिया कि भाई ट्रैफिक बहुत है, यहाँ से आपको चलना है. अभी वो चढ़ाई चढ़ने में भाई साहब, लाइक I don't exercise and all that. And एकदम end पे जाके I gave up. I literally sat on the road कि मैं अब नहीं जा सकती. But then my brother खींच के लेके गया कि नहीं, चलेंगे थोड़ा सा. And वहां पे पहुंचे हैं, इतना क्राउड टू वॉच अ सनराइज, लाइक इतना सारा क्राउड. आई हैव पिक्चर्स, लाइक इतना दिल्ली मेट्रो में नहीं होता ना जैसे वैसे. राइट. एंड देन जैसी फर्स्ट रे पड़ी है ना,
sun ki Kanchenjunga pe, that scene. Oh Right. my God, I can wake up every day to watch that every Was that day right? Right. because it's so worth it. And everybody shouted like koi celebrity dekh liya ho. They Right. started shouting and whistling, and it was dead cold, 25th December. And Right. I yet can. people were, yeah. नहीं बट अच्छी चीज है ना लाइक आई एम सो ग्लैड पीपल ऐसी चीज को देके चिल्ला रहे थे बेटर देन सेलिब्रिटीज आई एम प्रीटी श्योर Exactly. Yeah, way better. Exactly. And that's what, I even wrote on my Instagram that, कभी मैंने देखा नहीं लोगों को नेचर के लिए इतनी पागल होते. इतनी राइट 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 Otherwise, people are mostly, celebs. Oh, इसमें like different energy of people, different एनर्जी energy. राइट Yeah. So राइट I can राइट only imagine, the things that you tell about Everest and the experiences. I can only, just imagine because मैं वहाँ जाके तो experience अभी नहीं कर सकती. But then, oh my God, the thrills and the राइट beauty out of the world. So you also talk about, Everest Jana is not so easy. So you need राइट mental fitness and physical fitness, and most importantly, mental fitness that you talk about. So how राइट do you develop that, and how did you reach Everest? Like, इतनी आसानी से तो नहीं हो पाया होगा. You would have tried for years for that. Definitely. So I remember something that my expedition leader told me that to climb to the top of the world, you need to build a top of the world body and a top of the world mind. तो Wow. मुझे तो तभी पता चल गया था कि लोग हम इंजीनियर एक चीज बहुत अच्छी करते हैं. हम एक इंजीनियर है ना हर प्रोजेक्ट को है ना अच्छे से रिवर्स इंजीनियर करके अच्छे से उसको ब्रेकअप करके अच्छे से उसको अटैक कर सकते हैं. तो हमें हमें आइडिया आ Yes. जाता है कि यार इस चीज को टाइम लगने वाला है, ये कोई अभी ऐसे हो नहीं जाने वाला है थोड़ी टाइम में. So I had a pretty good idea यार, ये मतलब this is like a serious commitment. मतलब ऐसे ही नहीं होने वाला. I'll have to go through a proper process. I'll have to build that physical fitness. I'll have to build that mental fitness. और ये एक जर्नी है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत. लाइक मतलब मैंने 12वीं में इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तो ऐसे ही नहीं कि मैं एक दिन में इंजीनियर बन गया. 4 साल Exactly. इंजीनियर बनने में लगे, उसके बाद 2 साल मास्टर्स किया तो और इंजीनियर बेटर बना, उसके Hmm. बाद 10 साल काम किया तो और बेटर इंजीनियर बना. तो मतलब वैसे ही 0.1% लोग हैं जिनको जेनेटिक गिफ्ट मिलता है और जो लोग जस्ट टैलेंटेड होते हैं. बट बाकी 99.99% को तो यार वो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. Exactly. देयर इज नो अदर वे आउट, देयर इज नो शॉर्टकट देयर. मतलब Yeah. वहां कोई. So I had to go through the entire process, build that top of the world body, build that top of the world mind. And while I stress on the point that mind over body always, Hmm. but I stress over that point assuming that you have already built that body. Hmm. Without that body, without that top of the world body or top of the world fitness, if you are trying to depend a lot more on your mind, then you are basically setting yourself up for failure, and that Yeah. is not the right approach. तो फाउंडेशन तो हमेशा फिजिकल. मैं माउंटेनियरिंग की बात कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ दीज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी फैसेट ऑफ लाइफ Hmm. बाय टेकिंग द राइट एनालॉजी. बट अभी मैं माउंटेनियरिंग में स्टिक करूंगा. माउंटेनियरिंग के लिए एक बेस बनाना जरूरी है, वो एक फाउंडेशन बनाना जरूरी है. एंड वो माउंटेनियरिंग का फाउंडेशन इज योर फिजिकल फिटनेस एंड इज योर स्किल. Yeah. क्योंकि अगर तुम्हें आता ही नहीं है माउंटेनियरिंग क्या है, if you cannot be a safe mountaineer, if you cannot be a reliable mountaineer, if you don't know how to maybe walk on a glacier, how to climb a wall, तुम्हें ये सब आता ही नहीं है, then you are a liability essentially. और उसके ऊपर से तुम्हारी फिजिकल फिटनेस भी ठीक ठाक नहीं है, मतलब तुम तो लायबिलिटी भी नहीं, तुम तो मतलब यू आर जस्ट गोइंग ऑन अ सुसाइड मिशन काइंड ऑफ अ थिंग. सो द फाउंडेशन हैज टू बी रियली रियली स्ट्रांग. और वो फाउंडेशन एक बार बन गया तो उसके ऊपर यू देन गो एंड बिल्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे हम इंजीनियरिंग में करेंगे राइट. पहले हमने इंजीनियरिंग में हमारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर हमने जाके कहीं जॉब किया. Hmm. जॉब करोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम मिस्टेक्स करोगे, उसमें से सीखोगे और बेटर इंजीनियर बनोगे. सेम वे में माउंटेनियरिंग में तुमने फाउंडेशन बना लिया, अब तुम वो जाके अप्लाई करने वाले हो फील्ड में. एक एक्सपीडिशन किया, एक पहाड़ चढ़े, तुमको पता चला ये मिस्टेक्स की, यहाँ अच्छा हुआ, यहाँ नहीं हुआ. जाके और सीखा, जाके और रिवाइज किया अपनी स्किल्स को, बेटर किया स्किल्स को, वापस आए, वापस चढ़े कोई और एक माउंटेन. सो आई क्लाइम्ड मेनी मेनी मोर माउंटेन्स, मेनी स्मॉलर माउंटेन्स. Yeah. 5,000 मीटर वाले माउंटेन, 6,000 मीटर वाले माउंटेन, 6,500 मीटर वाले माउंटेन, 7,000 मीटर वाले माउंटेन. काफी सारे क्लाइम किया, काफी सारे एक्सपीडिशंस, काफी सारे ट्रैक्स. Practically there was a time that for the initial 4 years I was spending close to 3-4 months away in the Himalaya,
climbing, and the 8 months balance जो मैं बॉम्बे में था उसमें भी practically I used to be in the Sahyadri mountains near Mumbai just training myself. Wow. तो बहुत ज्यादा time spend किया because I came from a background where there was no predisposition to climbing or doing athletic things. Exactly. So I had to overcome bad genetics actually to even just be an average climber. यहाँ Yeah. तो मैं above average के अच्छे climber की भी बात नहीं कर रहा हूँ. Just to be an average climber, I had to work really hard. Yeah. तो वो सारा कुछ करना पड़ा. And see, mind, there is no blueprint in building a mind. फिजिकल फिटनेस में कैसा है, तुमने 5 यूट्यूब के वीडियो देखे, कोई कोच ले लिया, कहीं कोई बुक पढ़ लिया, उसमें तुमको बोलेंगे कि एक्स वाई जी करो, और तुमने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से वो एक्स वाई जी फॉलो किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो तुम्हें फिजिकल फिटनेस मिल ही जाएगी. Exactly. तुम्हें सिर्फ डेडिकेटेड रहना और तुम्हें फिजिकल फिटनेस मिल जाएगा. ज्यादा मतलब Exactly. ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट माइंड में थोड़ा रॉकेट साइंस वाली बात आ जाती है कि Yeah. तुम कैसे इसको करने वाले हो अभी, क्योंकि एवरी पर्सन विल हैव अ डिफरेंट जर्नी. ऐसा नहीं है कि हाँ तुम बैठ के ये मेंटल एक्सरसाइज करो. कहाँ, कौन सी मेंटल एक्सरसाइज? एक मेंटल एक्सरसाइज बताओ मुझे दुनिया में जिससे तुमको एवरेस्ट वाला माइंड मिलेगा. कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है ऐसी. मतलब यू कांट गो एंड से कि एक्स वाई जी किया मैंने तो मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा या मुझे वो माइंड मिल जाएगा. So it is just a sort of a trial and error where you are finding out what works the best for you. And for me, it all started with physical fitness, where I realized that when I started pushing myself in physical fitness, I was able to build a lot of mental fitness along the way. Like, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने एक वर्कआउट फिनिश किया, बहुत ही टफ वर्कआउट फिनिश किया, एंड आप मे बी आपके बॉडी में ना 5% बाकी एनर्जी अभी, Yeah. बट मतलब आप लिटरली मरी हुई हालत में हो, बट यहाँ वो 5% एनर्जी निकालने के लिए आपको माइंड को, आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि यार डू इट. एंड द मोमेंट योर माइंड इज एबल टू एक्चुअली डू दैट, बहुत टाइम तो आप फेल करोगे, आप बोलोगे नहीं यार जाने दो यार, बस डन, आई एम गोइंग होम और आई एम Yeah. पैकिंग अप, और कुछ ज्यादा करना नहीं है अभी मुझे. बट देयर बी दैट वन मोमेंट दैट विल कम जब भी आपका माइंड आपको फोर्स करेगा कि नहीं यार ये कर लेगा, लास्ट 5% वाला भी पुश करो भी अपने आप को, एंड यू डू दैट. एंड देन यू सडनली रियलाइज यार मेरे पास तो 5% गैस बाकी था यार, मैंने ही गिव अप कर दिया वो उसके पहले, बट अभी मुझे पता चल गया है. और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओगे तभी आप वो इजीली कर पाओगे, और ज्यादा इजीली कर पाओगे. Yeah. एंड स्लोली एंड शॉर्टली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम उसको और ज्यादा कर पाओगे, और वो माइंड तुम्हें बॉडी को इंस्ट्रक्ट करके और ज्यादा निकालेगा उसमें से. एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉडी भी बेटर हो रहा है, तुम फिट हो रहे हो तो तुम और ज्यादा आउटपुट दे पा रहे हो. Yeah. तो सारा कुछ मिक्स है. But that moment where your mind is able to instruct your body to do more, I think that was like the first critical moment to build mental fitness for me. Yeah. And then it was just, I think, gaining a lot of experience. तुम कभी जाके बहुत सारे पहाड़ चढ़ोगे ना, तो पहला पहाड़ तो तुम्हारा नहीं जाने वाला है, तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा, मे बी कुछ रॉन्ग जाएगा, कुछ राइट जाएगा, but you learn so many things out of it, and then you'll next time when you come you'll be a little bit more comfortable. True. You will know what to expect, and then Yeah. the next time you'll be better, and the next time you'll be better, and every single time you come back and climb a mountain, you are subconsciously adding that extra bit of mental fitness that you don't know that you are adding, but you are, because then you are suddenly much better on the mountain. साथ में फिजिकल फिटनेस भी बढ़ रहा है, तुम्हारा स्किल भी अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ मिक्सचर है, एक होलिस्टिक चीज है ये पूरी. तो that's how I sort of ended up building fair bit of mental fitness. And then of course there are always specific things, like I always used to get I used to get homesick. And so how do you deal with homesickness when you are up in the mountains, when you are away from your home, from your Yeah. family for not weeks but for months sometimes? Yeah. And how do you build that mindset? तो काफी सारी चीजें ये थी जिसके बाद I was able to achieve a decent level of mental fitness, or that comfort level where I was able to say कि अब मैं ready हूँ. And ये question भी मुझे बहुत मिलता है कि how do you know you are ready for Everest? Yeah. And it's difficult to answer क्योंकि every जन का अलग journey है. How can I tell कि तुम ready हो अभी? Exactly. Okay, तुम्हें खुद को पता चल जाएगा at a certain point in your journey that तुम अभी ready हो. तुमने इनफ फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग किया, तुमने इनफ स्किल बिल्ड किया, तुम्हें इनफ एक्सपीरियंस मिल गया है, एंड मे बी वो एक एक्सपीडिशन पे, किसी एक्सपीडिशन पे जब भी तुम टॉप पे होगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा यार अब मैं रेडी हूँ यार, अब
I have done enough. Now I think it's time to get and climb Everest. So for me, it was, I think, on in October 2013 on an expedition where I realized ab main ready hu. And that I think it was time to go to climb Everest, which is where finally I began my journey from 2014. So yeah, that was like sort of the journey. Exactly. So you also did it being a vegan. So ये veganism दिमाग में कैसे आया कि like and you are also a Gujarati and I heard that you were a vegetarian. So now in Indian diet and then when we are vegetarians the only source of what we think that good energy or healthy diet will come from milk and the proteins वगैरह milk complete food है. So we have all of this and then being a vegan and climbing the mountains, like how did that happen? See, vegan मेरी life में it came a lot before mountaineering came. So I was like, I became a vegan in 2002. And yes, Okay. I was a vegetarian before. And in some ways, maybe I was just vegetarian because my family was vegetarian. So my family was like, look, we don't kill other animals. Yeah, Other animals are like us. They have families and they want to live. So we don't want to like take away life from someone and then put it in our stomach. So exactly. we are compassionate people. So sort of grew up in that kind of a environment. Um, and then a friend sort of started pointing out to, क्या तुम दूध पी रहे हो, तुम्हें किसी ने चॉकलेट दे दिया जिसके अंदर अंडा है तो तुम वो भी खा लेते हो, एंड तुम लेदर का भी बेल्ट पहन लेते हो, एंड तुम वुल का स्वेटर भी पहन लेते हो, एंड आई एम लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ऑल दोस थिंग्स. And so he started like pointing out to the issues in the egg industry, and cruelty in the dairy industry, and cruelty in the wool industry or the leather industry. And as I started doing more research, I was able to connect the dots that there is really no difference between a glass of milk or a piece of meat or that piece of egg or that block of cheese, yeah, paneer, yeah, the leather belt I was wearing. At the end of the day, everything comes from either an abused animal or a slaughtered animal. Yeah. And to me, as a human being, I did not want to, मतलब जितना minimize कर सकूं मैं मेरा harm towards the animal kind, I wanted to do that. Yeah. And that is where the trigger came that अब मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मुझे information तो मिल गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ इस information पे. So when I did some research, I realized that maybe a starting point would be to go vegan, and to start it from like like I like to say, compassion begins from our plate. And तो पहले अपना प्लेट को देखो, क्या पेट में डाल रहे हो, एंड देन क्या पहन रहे हो, और डे टू डे क्या आइटम यूज कर रहे हो. एटलीस्ट इतने चीजों में तो मेरा फुल कंट्रोल है मुझ पे, क्योंकि ये मेरा पैसा है. मैं मेरे बॉडी में क्या डाल रहा हूँ मेरा डिसीजन है, कि इतने का एटलीस्ट आई शुड रियली वर्क ऑन दिस. एंड so I decided to go vegan. This was back in late 2002. And then it came time to climb Everest. So, like any smart person, I went on Google and I typed climbing Everest as a vegan. And I like to ask this question to everyone, that has it ever happened to you that you have typed a question on Google and Google has come back with zero results or like no good results? ऐसा कभी होता नहीं किसी ह्यूमन बीइंग के साथ. बट मैंने जब भी टाइप किया ना, तो मेरे लिए लिटरली जीरो रिजल्ट्स आए थे. मतलब ऐसा कोई रिजल्ट नहीं था जिसको देख के मैं बोल सकूं चलो यार मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा एज अ वीगन. Yeah. तो गूगल ने मतलब तो लिटरली ना बोल दिया कि Give हो up नहीं कर सकता दिया. है. तो and then I spoke to a few of my expedition leaders and people who had joined trips with, and they all said बिग माउंटेन्स क्लाइम करना है तो तुम्हें मीट खाना जरूरी है, एग्स खाना जरूरी है, और चीज या पनीर ऐसा कुछ खाना जरूरी है. उसके बिना तुम ना मसल बिल्ड कर पाओगे, तुम्हें ना एनर्जी मिलेगी. Yeah. एंड मेरा मेरा होल पॉइंट था दैट आई विल क्लाइम माउंटेन्स एज अ वीगन और आई विल नॉट क्लाइम इट एट ऑल. सो मेरा लॉजिक बहुत क्लियर था इस चीज में. Hmm. एंड देन as I started doing more research and as I started breaking this down, I realized that at the end of the day, you don't really need meat or eggs or dairy. What you really need is protein. Okay, Yes. that is what everyone is sort of trying to tell me. That तुम मीट खाओ, तुम अंडा खाओ, तुम डेयरी खाओ. एंड अगर आप ब्रेक डाउन करोगे कि मीट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, या अंडे का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, या मिल्क का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो प्रोटीन के लिए लोग खाते हैं.
तो मैंने Yeah. बोला मुझे प्रोटीन खाना है, मुझे ये सब नहीं खाना है. एंड anyone who knows the nutrition world knows that plant based foods में या vegan foods में या शुद्ध शाकाहारी वर्ल्ड में आपको पूरा प्रोटीन का आपका इंटेक सिर्फ प्लांट से इजीली मिल सकता है. Mm. ओके, लाइक देर आर सो, लाइक रेगुलर वेजिटेरियंस भी दाल खाते, रेगुलर वेजिटेरियंस भी सोया खाते, रेगुलर वेजिटेरियंस भी छोले खाते और रगड़ा खाते, और एक हर चीज में रोटी खाते, नाचनी खाते, ज्वार खाते, बाजरा खाते, एंड सीड्स खाते, नट्स खाते, हर चीज में प्रोटीन है. Hmm. Every plant on this world, including an apple we eat, including a banana we eat, has some protein in it. Now, that protein amino acid profile or the protein profile may not be as superior as meat or eggs, but जब भी आपने 4 या 5 चीजों को कंबाइन कर लिया, जैसे मैंने रोटी, सब्जी, दाल, राइस, ये सब चीज हम जब भी खाना खाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं कि मैंने 15 रोटी खाई बाकी साइड में कुछ नहीं खाया, Hmm. बस हो गया मेरा खाना 15 रोटी और पानी. तुम खाना खाते हो तो तुम 3 रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, साथ में कुछ और मतलब खाते हो, तो तुम 4-5 चीज राइस खाते हो, तुम 4-5 चीज साथ में खाते हो. और ये Exactly. हर चीज का अलग अलग टाइप का प्रोटीन होता है. जब भी ये बॉडी में मिक्स होता है तो आपको पूरा प्रोफाइल मिल जाता है विच इज सिमिलर टू मीट, मिल्क और एग्स. Yeah. एंड सो आई रियलाइज दैट मतलब दिस इज ऑल जस्ट मतलब मिथ है. Hmm. ये सारी चीज इज जस्ट अ मिथ. एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस आउट. आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं पहला ही पहाड़ एवरेस्ट चढ़ूंगा. एज आई सेड के पहले छोटा पहाड़ चढ़ना है फिर बड़ा पहाड़ चढ़ना है. Yeah. तो आई सेड एक छोटे पहाड़ पे टेस्ट करेंगे कि एज अ वीगन कितना अच्छा क्लाइंबिंग होता है, और देखते हैं ना. मतलब नहीं हुआ क्लाइंबिंग, समझो कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वापस घर जाके मैं ट्राई करूंगा और 1 2 3 बार. फिर भी लगा कि नहीं यार वीगन डाइट पे क्लाइंबिंग हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल है, तो मैं बंद कर दूंगा क्लाइंबिंग करना. ऐसा मुझे ठीक है, एवरेस्ट इज अ वेरी बिग ड्रीम, इट्स माय लाइफ बिगेस्ट ड्रीम, बट if I had to kill animals, I'm not for this dream. So Yeah. I climbed a couple of small mountains in 2011. These were, first one was a 16,000 feet mountain, and then second one was a 20,000 feet mountain. उत्तराखंड में थे और लद्दाख में थे, और I did them as a vegan, and I had zero problems when it comes to my food. Like zero problems. Hmm. As long as I was eating enough food and I was eating and I was not like removing any food groups. Like ऐसा नहीं कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, या मैं बहुत लोग बोलते हैं मैं ग्लूटेन नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा और मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते, मुझे फ्रूट अच्छे नहीं लगते. हाँ. फिर तुम हवा पानी पी के और पावड़ा खा के कोई हेल्दी नहीं हो सकता है इस दुनिया में. Exactly. Okay, so you have to include all the food groups and you have to eat healthy. So when I did that, I realized that it is not a problem at all. Why are people making such a big deal out of it? Why Hmm. is it that even today I sometimes wonder, why is it that people are so wowed when they hear that I climbed Everest as a vegan? Hmm. Shouldn't it just be wow enough that I climbed Everest, and that climbing it as a vegan should not be that extra wow factor, that just veganism is like a nothing out of the place. I'm eating a very healthy diet. I'm getting all my nutrition from my food, so it should not never be a problem. And I just tested that theory on small mountains, and then I said, look, I understand mere expedition leaders, and they have certain hesitation or that certain reservations about my lifestyle and about my food, but I will prove them wrong. ये 2 छोटे माउंटेन क्लाइम हो गए ऑन अ वीगन डाइट, आई एम प्रीटी श्योर आगे भी हो ही जाएंगे. Yeah. एंड बिलीव मी, पूरे 10 साल के पिछले 10 साल के जर्नी में देयर हैज नेवर बीन अ टाइम दैट वीगन डाइट ने मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम कर दी हो. कुछ भी इशू नहीं हुआ. अभी 18 साल हो गया मैं वीगन हूँ, एंड आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम क्लाइंबिंग माउंटेन्स और पुटिंग ऑन मसल ऑन माय बॉडी और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. बहुत लोग बोलते हैं कि वीगन्स बॉडी नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते. रिसेंटली लास्ट 6 months I went through another transformation just for as a test purpose, and today I have a 6-pack abs, and Oh. okay. Wow. So I mean लोग बोलते हैं कि ये भी नहीं कर सकते, तो ठीक है यार, मैं माउंटेनियर हूँ फिर भी मेरे पास 6-pack abs है और मैंने सारा वीगन डाइट पे ही किया है, तो ऐसा नहीं कि वो भी नहीं हो सकता है. तो Yeah. मतलब that all I wanted to do through my
एवरेस्ट बड़ा ड्रीम था, बट उसके साथ मैंने ये अटैच कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इफ अ वीगन कैन क्लाइम एवरेस्ट successfully while staying safe, while being a very good mountaineer, uh, anyone on this world can do whatever they want while being a vegan. अगर मैं एवरेस्ट चढ़ गया, imagine मैं गुजराती बंदा हूं, I used to be 110 kilos back in 2009 and 10. Wow. I have no genetic gift. I have no genetic predisposition to athletics or fitness or climbing mountains. Yeah. And if I, जो बॉम्बे में रहता हूँ plus 40 degree Celsius में, if I Yes. can, turn around my life on a healthy vegan diet, build that muscle, build that endurance, and go and climb Everest not just once but twice, then anyone in this world can achieve their biggest dreams without harming animals. That is like, Exactly. sort of मेरा एक मोटो बन गया मेरे पूरे climbing के journey का. So Yeah. and आपने पूछा कि 2 बार क्यों क्लाइम किया या गेयर का क्या इशू है. सो कभी कभी आप क्या पहाड़ चढ़ते हो ना, तो बहुत लोग आपको बोलते हैं फेदर जैकेट पहनना, आपको ठंडी कम लगेगी. Yeah. So biggest problems with climbing is that significant amount of gear जो आप एवरेस्ट के टॉप पे पहनते हो, वो गेयर है ना फेदर के जैकेट से बना होता है. एंड फेदर कहाँ से आने वाले? फेदर कहीं कोई प्लांट में से तो फेदर मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए तो एनिमल ही चाहिए. वो Yeah. एनिमल के फेदर्स को काटना पड़ेगा. अभी एनिमल ऐसे तो काटने नहीं देने वाला है अपने फेदर्स. हाँ आ लो, ये लो मेरा, हाँ ये लो काटो, हाँ मैं सोशल सर्विस करने बैठा हूँ तुम सब ह्यूमंस के लिए, ऐसा कोई एनिमल नहीं बोलता है. ठीक है. सो Yeah. फोर्सफुली उस एनिमल को स्लॉटर किया जाता है और उसके फेदर्स को निकाल दिया जाता है और उससे फेदर जैकेट बनाया जाता है. तो आई wanted to adhere to strict vegan standards throughout my entire mountaineering journey. But unfortunately जब भी मैंने पहली बार एवरेस्ट समिट किया, तो पिछले 18 साल में मैंने वीगन खाना ही खाया है. कभी आई हैव नेवर ईटन नॉन वीगन खाना. तो वो एक बात है. बट गेयर में कैसा हुआ कि जो मैं जैकेट पहनता हूँ एवरेस्ट के टॉप पे, विच सेव्स मी इन -50 डिग्री सेल्सियस एंड क्रेजी विंड्स और 30,000 फीट की हाइट है, ऑक्सीजन भी नहीं है. That jacket, unfortunately, for the first time was made from feathers. Yeah. Because there was no non-feather jacket available in the entire world. मतलब मैं ढूंढ के थक गया. मैंने तो जाके सारी कंपनीज को भी मैंने ईमेल लिखे, मैसेजेस लिखे, बहुत ट्राई किया, किसी के भी पास कुछ भी नहीं था. So finally I went and I climbed Everest one time. मैंने बोला चलो एक बार let's just prove to the world that हो सकता है as a vegan. Let's just get over the first barrier. फिर I wrote to a company in Italy called Save the Duck. I just ऐसे ही एक फ्रेंड ने बताया कि यार तुम लिखो यार इनको, मे बी ये लोग तुम्हारे लिए बना के दे. Yeah. तो लकीली उन्होंने हाँ बोला. And in 2018 we created the first ever feather free jacket of the world which would go on top of Everest. फिर मैंने जाके एक माउंटेन है जिसका नाम है लोटसी. इट्स द 4th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. मैंने वो चढ़ाई की उसकी. And I was wearing that jacket. I was testing that jacket, and believe me, it worked like a charm. Yeah. And that's when I decided I will go back to Everest again and climb it. And I went back to climb Everest in 2019, and that's when I succeeded in climbing Everest for the second time. And yeah, I think in 2019 when I actually stood on top of Everest, that is truly when I finished the dream. क्योंकि जो 2016 का था, that was just like a stepping stone towards the final dream. Exactly. While being a vegan 100% of the time, not just from my food perspective, but also from all the things that I was wearing on my body perspective. Exactly. That's wonderful, actually. इतना कोई नहीं सोचता. And then you're thinking a lot about, being cruelty free. And I would also like to tell the audiences who would be listening that the main purpose of going vegan was to be cruelty free. At the end of the day, milk की हमें जरूरत ही नहीं है. Because milk में क्या होता है? प्रोटीन और कैल्शियम. और प्रोटीन और कैल्शियम हमें शाकाहारी डाइट से इजीली मिल सकता है फ्रॉम प्लांट्स. सो वी रियली डोंट नीड टू किसी और प्राणी का शोषण करने की हमें जरूरत नहीं है. एक वे में एक माइंडसेट है वेलफेयर करना, कि हमने गाय को बहुत अच्छे से रखा, फिर गाय का बछड़ा हुआ, फिर गाय के बछड़े ने सारा दूध पी लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत दूध अगर बच गया तो वो हम लेंगे. वो एक वेलफेयर का माइंडसेट है. पर आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतना 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में.
अगर बचा हुआ दूध जो और बिना गाय को किसी हार्मोन लगाए हुए, बिना गाय को किसी इंजेक्शन मारे हुए, एकदम नेचुरली, वो बचा हुआ दूध उतना 140 करोड़ लोगों को कभी इनफ नहीं होने वाला है. Exactly. So that is why True. I personally think we need to move away from exploiting animals, using animals, abusing animals for our benefit. True. We need to move away from that completely. True. You're right actually about it. How animals are getting so exploited just for the milk. And then they are like, they have myths that you cannot climb mountains, you cannot be fit, you cannot be healthy. And then there you are proving it all Today, wrong. and just not even me. There are all the top athletes in the world. आज किसी भी फील्ड में ले लो, टेनिस में ले लो नोवाक जोकोविच या सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, या फिर कार्ल लुइस ले लो रेसिंग में, या फिर लुइस हैमिल्टन ले लो F1 रेसिंग में, या फिर मतलब बॉडी बिल्डिंग से लेके वेट लिफ्टिंग से लेके स्प्रिंटिंग से लेके कोई भी स्पोर्ट ले लो दुनिया का, कोई भी, विराट कोहली को ले लो क्रिकेट में, मतलब हर स्पोर्ट में आज काफी सारे टॉप एथलीट्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्लांट बेस्ड डाइट. तो वैसा नहीं है कि तुम्हें प्लांट्स खाने से कोई तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाने वाला. आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट एंड यू हैव टू प्लान योर डाइट वेल. मतलब तुम्हें जस्ट इंश्योर करना है कि तुम हेल्दी खा रहे हो. तो ऐसा मतलब सी जंक फूड खाओगे तो तुम नॉन वीगन जंक फूड खाओ या वीगन जंक फूड खाओ, तुम्हारा हेल्थ कभी अच्छा नहीं होने वाला है. तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी, मतलब जस्ट अच्छा हेल्दी खाना खाओ बस. Okay, जो हमारी दादी बोलती थी ना कि अपने वेजिटेबल खाओ, अपने फ्रूट खाओ, और तो वो हमें वापस वो करना जरूरी है. Exactly, the ancient India ने जो सिखाया था. Right. Yeah. Okay, so like coming to the Everest part, Everest मेरे हिसाब से तो is one of the most deadliest mountains to climb in the world. So, and being a vegan or not vegan, but then climbing has its own challenges. So what were those challenges? And there are many stories, and whichever you would like to cover, although because then there's plenty. So I'll tell a story about my 2015 attempt when a very big earthquake hit Nepal. And I still remember we were at the base camp and we were in middle of that big earthquake. Yeah. And a 7.9 magnitude earthquake. So that earthquake caused a big avalanche. Yeah. And मुझे अभी भी याद है, मैं टेंट के बाहर खड़ा था, हम बात आजू बाजू में देख रहे, एवलांच का आवाज आ रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है एवलांच कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पहाड़ सामने है ना, तो आपको इजीली दिख जा रहा है कि वहां से कुछ आ रहा है. बट उस दिन कैसा था ना कि पूरा लो क्लाउड फॉग हो गया था, तो लाइक 50 मीटर से ज्यादा कोई विजिबिलिटी नहीं थी. तो मुझे 50 मीटर से ज्यादा दूर कुछ दिख भी नहीं रहा था कि क्या है. एंड बाय द टाइम द एवलांच केम, लाइक 50 मीटर की दूरी पे आ गया या 100 मीटर की दूरी पे आ गया, we suddenly realized that it is not a simple small avalanche, it is an avalanche almost the size of a tsunami. Like left of the sky to the right of the sky, जहां तुम्हारी नजर पड़े पूरे स्काई एक एवलांच से भरा हुआ था. एंड इन दैट मोमेंट मैंने तो मेरे सारे प्रेयर्स बोल रही है, मुझे पता चल गया था मेरी टिकट कट गई अभी. आई मीन इट्स नॉट एज इफ आई वाज थिंकिंग दैट मैं मरने वाला हूँ, आई वाज गारंटीड कि मैं मरने वाला हूँ यहाँ अभी. मतलब मैंने हो गया था मेरा कि चलो यार अब लाइफ फिनिश है यहाँ. एंड सो लकीली it was a very end portion of the avalanche, so we didn't die. Frankly speaking, forget dying, we survived without a scratch on our bodies. There was a bit of breathing problem that I had, but luckily the guy next to me, he opened his jacket और उसने मुझे अपने जैकेट में आके सांस लेने को बोला. तो थोड़ा बीच में वो प्रॉब्लम हो गया था, but otherwise we survived miraculously because 21 people died at the base camp and some 70 were injured badly. मतलब बुरी तरह से, मतलब लोगों के हाथ पैर खत्म टूट गए थे, मतलब बुरी तरह से मुंह पे लग गया था, ऐसा बुरी तरह से लगा हुआ था. So we didn't even get a scratch and I'll tell you 50 feet दूर 5 लोग मरे थे. 50 फीट माने कितना, तुम्हारे एक रूम से दूसरे रूम में कभी घर में डिफरेंस इज 50 फीट. That is the kind of difference that saved my life. And believe me, every day since that moment I count as a bonus in my life, because I was gone, I was dead. I mean I was short dead. आप वो वीडियो देख सकते हो YouTube पे जाके, you can go on YouTube and type Everest avalanche and पहला ही वीडियो आएगा और उस वीडियो में मैं भी हूँ. तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने क्या देखा होगा वो दिन. I was
practically dead. So I'm lucky to be alive. I'm grateful to be alive, and I'm sharing my story. But like every दिन मेरे लाइफ का बोनस है, and there's no time to waste anymore. So जो भी ड्रीम्स है, जो भी पैशंस है, काफी मैं घर आया ना तो मुझे काफी लोगों ने बोला यार अब मत जाओ यार, इतने लोग मर गए नेपाल में, 10,000 लोग मर गए, बेस कैंप में 21 लोग मर गए, यू सर्वाइव्ड मिराकुलसली, वी हैव सीन योर वीडियो, डोंट गो, मतलब इतना खर्चा हो रहा है, एंड सो मच प्रेशर, यू आर द ओनली ब्रेड अर्निंग मेंबर ऑफ द हाउस, कुछ हो गया तुमको तो क्या होगा, एंड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, एंड एंड आई सेड नहीं यार, बचाओ ना, then I had to finish my dream. This is it. ये life bonus है यार अभी. I have to finish my dream. And yes, there's a lot of risk involved, and there is a chance that I can die again. But you know, just the fact that मैं एवरेस्ट पे मर सकता हूँ. I had already known that back in 2010 के मैं एवरेस्ट पे मर सकता हूँ. तो ये ड्रीम पे मैं ऐसे ही टाइम पास करने नहीं निकला हूँ. For that matter, I could, you know, there's far more likelihood that I could die walking on a street in Mumbai, given the traffic conditions and everything here. So I think there was a big sort of a revelation or epiphany that day, that if I have to finish my dream, the best time is not tomorrow or not the day after or not in 60 years. अभी मैंने मेरा सारा पैसा सेव कर लिया है. You know, बहुत friends बोलते हैं 60 years के बाद हम रिटायरमेंट करके ट्रैवलिंग करेंगे. भाई 60 years के बाद तुम्हारी हेल्थ ही ऐसी नहीं होगी तो तुम क्या ट्रैवल करने वाले हो? फिर तुम मेडिकल बिल के पैसे भरते रहना लाइफ भर. So again, nothing wrong with saving the money for your retirement and those things. I think those are all smart things to do. But to get so scared that you don't want to run after your dreams, I think that it's a tricky call to make, and I didn't want to make that call. Given that I had just survived miraculously, I thought अब ड्रीम करना है तो अभी करना है, कोई दूसरा टाइम नहीं है इस चीज का. So that's why I sort of reaffirmed and went back and climbed again in 2016. And I have to tell you, I think giving up was never an option, frankly speaking. And that is something I tell everyone, that कभी माइंड में थॉट्स आए ना कि मैं गिव अप कर रहा हूँ मेरे एवरेस्ट के जर्नी पे. यू नो, हर जन का अपना एवरेस्ट होगा जिंदगी में. किसी को अपना घर बनाना है, किसी को यूएस जाना है, या यू नो मे बी कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, कुछ करना है. हर जन का खुद का ड्रीम होता है. एंड वो ड्रीम में बहुत बार ऐसे पड़ाव आएंगे व्हेन यू थिंक यार आई वांट टू गिव अप, यार बस बहुत हो गया, आई पुट इन सो मच. I feel that when you have that feeling now, after putting in all this effort that I want to give up, I'm telling you, you are like very close to the top. I think just a bit more effort and being on track will put you on the top. So similar to my journey, where if I had given up in 2015, तो शायद मैं कभी एवरेस्ट नहीं चढ़ता. So it was a smart move to go in 2015, 16 again and stay on track and get to the top. So yeah. Exactly. And then you also went to Nepal. I heard that you did go to Nepal, and then to, you know, because it happened in Nepal and it affected Nepal even worse. See, base camp Nepal mein hai. I mean, we were in Nepal, and we went to Kathmandu, which got really impacted. So one thing that we saw was that there was too much destruction, and a country that had given me so much, or more than the country, the people of the country had given me so much. The mountains have given me so much. I thought I had to give back in some way. And while discussing with friends, a lot of them said that, yeah, you take amazing photos and you have been like a photographer of many teams and you have all these amazing pictures. Why don't we maybe do an exhibition of yours, only exclusively of Nepal pictures, and maybe sell some pictures, and whatever money we raise, we contribute that to the Nepal rebuilding effort. And so after that is when, you know, sort of that idea came. हमने 3 एग्जीबिशन किए, एक मुंबई में किया, एक लॉस एंजलिस में किया, और एक ऑरेंज काउंटी में किया, which is again near to Los Angeles. And I think we raised करीबन $20,000 through all the 3 exhibitions, and selling the photos, and again the idea was also to raise a lot of awareness that अगर आपको अपना अगला वेकेशन लेना है तो मे बी 1 साल के बाद आप वापस नेपाल जाओ और अपना वेकेशन नेपाल में लो. सी, वन वे इज दैट तुमने पैसा देके कंट्री को पैसा दे दिया, एंड दैट्स अ गुड वे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत होती है टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम.
but long term, if you give them or if you contribute into their economy, I think that's a great way in rebuilding a country. And Yeah. so that was my mindset, that two thing, raise awareness so that people go and contribute to the economy, and then sell photos so that we can raise some money to give right away to the country, whatever we can give it. इसमें मुझे मेरा छोटा bit करना था, so that is something that I did. And that time I also realized one more thing. I got connected with a non-profit organization called Sansar Maya, Yeah. and their whole idea is to educate the kids of Nepal. If we can give education, because Nepal is a very very poor country, and Hmm. infrastructure और education का काफी मतलब वहाँ issue है. And this non-profit was doing some amazing work in the field of education. So मेरा मानना ये था that if in some way we can uh, educate the young minds of the country, then again that is also another great way of building the country. Yeah. So that's when I sort of took on a board position in the non-profit. So now I am a board member of the non-profit, and for last few years I have been part of the non-profit, and we have been working really hard. uh, we have two centers there, about 120 small kids and about 100 mothers. So we also run women's literacy programs there. So उन्हीं बच्चों की माँ को भी हम सुबह को पढ़ाते हैं, बिकॉज वो माओ को भी काफी टाइम है ना, इवन बेसिक लैंग्वेज नहीं आता है, बेसिक मैथ्स करने को नहीं आता है, तो वो लोग किराना के शॉप पे भी नहीं बैठ सकते हैं, and they can't do anything. They can't even communicate with their husbands who are maybe working in the Middle East. तो काफी सारी उनको भी दिक्कतें आ रही थी. So we started educating the mothers, and we started educating the kids by giving them science, technology, and engineering, and dance, and all of those things. So that's something that I've been very closely involved with, and something I'm very passionate about is that we have to uh, look. I can't change the whole world, but अगर मैं मेरे से जितना बन सकता है उतना, I have I live a very privileged life, frankly speaking, and I got a lot of opportunities, which is why I'm here today in my life. And if I can do that for someone else, I think that would possibly be the biggest mental satisfaction that I'll ever get in my entire life. And as I said, I can't change the whole world, but I can change the world around me. At least I can make a small impact. So that's what I'm trying to do. That's the attempt constantly. That's beautiful. No, that's I read about it and then I was like, yeah, this is like so kind efforts. Like, and you're not just giving them money, you are impacting their lives by, teaching the kids about all the things that they need to know. So which Right, is right. how they can also develop their own self and then earn in the future. It's not just getting Exactly. money. Yeah. Right. Yeah, so that's even better. And then their moms are educated now. They can educate somebody else. So it's gonna Right. keep growing. Yeah, Exactly. exactly. That's our hope. Yeah, it will. It's wonderful. So like we all talk about Everest, it's deadly. It's you had many experiences. You have seen death. You have seen people losing their toes and a lot of stuff. But then any funny experiences from Everest or some good experiences from Everest? Like there are people with you from different cultures and you have your Sherpas. So Right. any good moments from being at Everest? See, one of the things that in the last 10 years of going into Nepal that I have really been able to do is established a very good relationship with the Sherpa community. Yeah. And कभी कभी कैसा हो जाता है ना that you when you read about me or you read about other Everest climbers, the focus or the spotlight is always on us. But one of the things that people really forget about is the roles that Sherpas play in our life, or the roles that Sherpa play in the entire Himalayan mountaineering scene. मतलब Hmm. एक शेरपा का अगर मैं रोल बताऊं तो everything, right from setting up the base camp to finding the route on the higher camps to setting up the route to pitching the tents to cooking the food to boiling your water to even supplying all the carrying your gear, मतलब literally आपके साथ वो टॉप तक चलते हैं. Literally they are like your shadow throughout the entire journey. And if there are any true heroes
there are any true Superman in the Everest world, I think it has to be the Sherpa people. And I have had an amazing relationship with a Sherpa in last 5 years who I've been a climbing partner of. His name is Mingma Tenzi Sherpa. Mm. He comes from the Makalu region in Nepal, and on the mountain he's my everything. He's like my family away from my this family that I have here, and he's like my mother, father, my sister, my brother, my friend, my mentor, my everything. मतलब literally लास्ट ईयर तो मुझे एंड मतलब मैं मुझे अभी भी पता है, मैं समिट करके जो तीसरे नंबर के कैंप पे आया था, आई वाज सो टायर्ड फॉर अ बिट. उसने लिटरली मेरे जूते निकाल के दिए. मतलब आई एम अ वेरी गुड क्लाइंबर and I like to take care of myself. Like I don't allow anyone else to do my stuff. But Yeah. मतलब लिटरली मतलब जो मेरी मम्मी मेरे लिए करेगी ना, वो उसने मतलब वो मेरे लिए करेगा. या जब भी उसको मेरा पापा बनना है तो मेरा पापा भी बन जाएगा. और I mean, we have had a great relationship in last 5 years, and I still remember कि मैं second time एवरेस्ट कर रहा था ना, तो मेरी फैमिली मतलब थोड़ी वो थी यार कि तुम क्यों वापस जा रहे हो यार, ये Mm. क्या है, ये क्या पागलपन क्यों है, why second time. And my wife was like, um, I want to meet Mingma. And so हम नेपाल में, एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ नेपाल गए, Mm. and we met Mingma. Wow. And after she met Mingma, she's like, I will only allow you to go to Everest if you climb with Mingma. Wow. That's the only way you are climbing Everest again. So like that's the kind of trust even my family has on Mingma, and he's my family basically. So uh, we have I have had some amazing sort of experiences with Mingma. And um, my wife became pregnant last year, so this was in March of 2019. And I still remember when I told Mingma, he was like a baby. He was like मेरे से ज़्यादा joy उसको हो गया. So I mean, that's the kind of sort of relationship we have, the camaraderie we have, and I think that's something that I truly value, Yeah. because I learn so much from him, uh, just by looking at him, how he sort of behaves, how he climbs, how he manages himself on the mountains. I mean, even if I can be 5% of what he does on the mountain, Yeah. believe me, I would be better than most climbers on the world. अगर मैं उसका 5% भी बन जाऊं, तो imagine करो वो क्या level पे होगा अभी. Yeah. Like, why I call them Superman, because they are Yeah. truly Superman. Yeah. Like you have climbed 2 times, and I've heard that he has climbed 7 times. He's climbed 8 times. Eight Last time times. was his eight times. But Wow. वैसे तो अब मतलब there are so many Sherpas. There is Kamirita Yeah. Sherpa who's climbed 24 times. Wow. तो हम ऐसे एक बार में मतलब डरते हैं. right. So, any moment from campsite pe when you guys are together, like what is that vibe, entire vibe of that camp of meeting different people from different communities who want to who have come here to climb Everest? See, कैसा होता है ना, that a lot of teams run differently. Like हमारा टीम, जो भी जिस टीम का मैं पार्ट होता हूँ ना, we are a very open team. Okay. लाइक हम ऐसा नहीं करते कि हमारे कैंप में कोई आ नहीं सकता है, हमारे कैंप में कोई चाय पीने नहीं आ सकता है, हमारे डाइनिंग टेंट के अंदर कोई घुस नहीं सकता है. हाँ. लुक, क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर. Yeah. Some of the western teams charge as close as $1 lakh. That is Wow. close to about 75-80 lakh rupees. ठीक है, एक ही क्लाइम के इतना वो लोग चार्ज करते हैं. तो Yeah. समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग है ना अपने कैंप में किसी को घुसने भी नहीं देते. तुम्हें Oh. चाय पीने के लिए भी वो लोग नहीं बुलाते, तुम्हें अंदर भी नहीं आने देंगे. लिटरली बाहर वो लोग है ना अपने कैंप साइट के बाहर है ना एक छोटी सी रस्सी लगा के रखते हैं, जिसपे एक बोर्ड लगा रहता है, विजिटर्स नॉट अलाउड. तो हम थोड़ी अलग टीम थे. वी वर लाइक, यार लाइफ इज शॉर्ट. आई मीन होपफुली I get to live to 80 and do more climbs. I hope But to. but like हमें ऐसा कुछ नहीं था. We are like, यार look, everyone is an adult. No one's like trying to, like मैं तुम्हें आके तुम्हारे कैंप में आके तुम्हें इन्फेक्शन देने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ. मुझे भी क्लाइम करना है, मुझे भी इन्फेक्शन फ्री स्टे करना है, मुझे भी हेल्दी रहना है, सबको हेल्दी रहना है. सो Yeah. we just assume that people will have better judgment, and we generally had a very open sort of a thing. But everyone is very very focused when they are at Everest Base Camp, because everyone
has put in a lot of effort, lot of money, lot of Yeah. training, years and years. Some of them come after 20 years of training and saving all that money. Um, but there are always light moments. For example, we had Rafiq, who is a policeman from Maharashtra. Okay. And Rafiq was part of my expeditions for 3 back-to-back years when we were attempting Everest. Okay. तो मुझे अभी भी याद है कि एक रात को हमने हमारे कैंप में एक थोड़े एजेड कपल क्लाइंबर थे, उनका आई थिंक एनिवर्सरी या कुछ था, तो रात को कोई तो कहीं से ये पोर्टेबल स्पीकर लेके आया और सॉन्ग शुरू कर दिए. इतनी ठंडी थी. आई थिंक दैट इवनिंग वाज लाइक -16 -18. लाइक सब बड़े Wow. बड़े बड़े जैकेट पहन के अंदर बैठे हैं. डाइनिंग टेंट के हीटर भी चालू पड़ा है. And that night Rafiq must have danced for like 3 hours. And I'm like, Wow. हम सब उसको बैठ के देख के like we were thoroughly entertained, क्योंकि वो मतलब पागल की तरह डांस कर रहा था. And I'm like, क्या हो रहा है भाई, यहाँ हमें सांस लेने की भी प्रॉब्लम हो रही है, तुझे डांसिंग करने का सूझ रहा है. So, Yeah. but anyways, I mean, such good moments all the time happen. There were many senior climbers from Bengal who came the next day, and we had Antakshari session. So people are playing Antakshari, and there's always fun going on at the base camp. When you are at the base camp, the life is very chill, life is very relaxed, and life is very slow. You wake up in the morning, and until the night you have nothing to do. When you spend a lot of time at the base camp, so life Yeah. बहुत ही simple होती है. And we go around, we meet climbers from other countries, and there's also Japanese climbers on our team, so we get to know more about their culture, more about their mindset. We had a Yeah. Polish climber on our team, तो उसका भी पूरा completely different था. तो इंडियन क्लाइंबर्स होते हैं, यूके बेस्ड क्लाइंबर्स, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्लाइंबर, अमेरिकन क्लाइंबर्स, तो हमेशा जनरली मिक्स टीम्स होती है. एंड व्हेन यू आर एट द बेस कैंप, थिंग्स आर वेरी चिल until it gets to the last points where जब भी तुम finally climb करने जाने वाले हो, Yeah. then things become very very serious. People are very getting into their zones, कि तुम्हें वो mental zone में भी जाना जरूरी है कि अभी तुम 5 दिन के लिए अभी सिर्फ चढ़ाई करके वापस आ जाने वाले हो. And you need to be focused. Then you can't be too much into politics or religious discussions or ये discussions or वो discussions, and then you are just like focused. You will just be methodical. ये करना है, ऊपर जाना है. That's it. So yeah. Yeah, beautiful moments, like when nobody's planning those things and you're just at the moment, Right. almost at the and top of and the world. and this is not like, a lot of people like, since you initially said about traveling, this is not quintessential traveling, because Yeah. traveling में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम लोगों को मिल रहे हो, तुम खाना पीना खा रहे हो. Yeah. यहाँ तो तुम एक ही बेस कैंप पे हो, तुम मूव भी नहीं हो रहे हो कहीं. तुम कभी कभी तो 20-20 दिन तुम्हें उसी टेंट के अंदर निकालने हैं. Hmm. और फिर तुम जब भी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हो, तो 26,000 फीट में यू आर नॉट एंजॉइंग, you are just miserable, you are suffering, and sometimes you're questioning why you are doing all of this, until you get back home and then you look at all of this in retrospect and think, wow man, I climbed Everest, that was so much fun. It is Yes. not fun when you are doing it, but it's a lot of fun when you look back in retrospect. So it is Yeah. not a typical traveling, not even offbeat traveling. It's just not थोड़ा Exactly. अलग हट के ट्रैवलिंग है ये, अगर आप इसको ट्रैवलिंग बोल भी सको तो. बहुत हटके है. You're risking your life in a way. Right. When you're seeing people dying, you are seeing dead bodies. Like Right. रोहतांग पास में I was going. It's such a small thing कि नीचे एक ट्रक पलटा हुआ दिख रहा था, and I literally went back. नहीं देखना है इसको. And then you're talking Everest where you're seeing dead bodies sitting Right. right there. Right. Right. Yeah, so it's not traveling at all. So yeah, it's not typical traveling. It's just it, it requires some different kind of mental mindset to be there for 2 months and go through all that. So yeah. Exactly, and then you also explain that there's so less oxygen that your brain stops, working properly. The person is It, not even able to tie their shoes. So yeah. it's just tough, because the higher you go, the lesser the air pressure, consequently the lesser oxygen your lungs are getting, and it's a tough situation. I still remember हम summit करके 4th कैंप पे वापस आए थे. This is on the south side.
Yeah. Those are 16 में, and one of the guys wanted his water bottle filled, and we were in sharing the tent. So Okay. he said, यार कुंतल तुम अपने जो अपना शेरपा है, I was a team leader, so he said, he requested me कि यार तुम उसको बंदे को बुला यार मुझे पानी भर के दे. Yeah. Now to tell anyone something at that altitude, even for Sherpas, it's hard. तो मैंने बोला Okay. यार पानी की बोतल निकालो, तो इसने नहीं यार शेरपा को ही दी थी मैंने पानी की बोतल. So then I shouted that Sherpa's name. The Sherpa came, and Sherpa said, we told him इसको पानी चाहिए, आपके पास ही बोतल है. तो शेरपा ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है. मैंने बोला Hmm. भाई ये तो ना बोल रहा है. तो बोल रहा नहीं उसके पास ही बोलो उसको चेक करने को. शेरपा वापस गया अपने टेंट में, जो भी थोड़ा दूर है, मतलब 100 फीट भी दूर है, 26,000 फीट की बात कर रहा हूँ मैं. Huh. अपने टेंट पे गया, वापस आया, बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने पूरा बैग एम्प्टी किया. सो ऑल दिस एफर्ट शेरपा पुट, एंड आई एम लाइक नहीं है भाई इसके पास. उसके बैग के टॉप में ही थी बॉटल. सो यू जस्ट, I mean, a very, very silly mistake, but or just oversight. But Yeah. तुम्हारा ब्रेन बहुत छोटी छोटी चीजों में भी काम नहीं कर रहा है. Like it's just your brain is functioning very slow, and you are Yeah. not able to make better decisions. As simple as that. Yes. Like you go totally blank. Like a guy Blank, and cannot you're just slow. मतलब तुम्हें कोई flow. भी चीज करनी है तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत Hmm. ज्यादा थक रहे हो. तुम्हें खड़े होके तुम्हें अगर इवन इफ यू जस्ट वांट टू मूव इनसाइड, यू आर स्लीपिंग बैक फ्रॉम वन साइड टू द अदर, यू आर गेटिंग टायर्ड. सो योर बॉडी इज इन एक्स्ट्रा कंजर्वेशन मोड एट दैट पॉइंट. और फिर तुम अभी समिट करके ही नीचे आए हो, विच मीन्स दैट योर बॉडी डजंट हैव एनी एनर्जी. Hmm. Everything is tired. So it's a tough situation. It's a It tough is situation up there when you are climbing mountains. definitely like big deal to be at the top, the toppest. वहां तो बिल्कुल ही हवा खत्म हो जाती होगी. नहीं मतलब ऐसा नहीं होता है कि लाइक काफी लोगों को लगता है कि मैंने अगर मेरा ऑक्सीजन का मास्क निकाल दिया देन आई विल बी लाइक ऐसा होना शुरू हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट यू आर स्लो. लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू हाउ, बट समझो अगर मैं सी लेवल पे एक रूम से दूसरे रूम गया तो आई एम नॉट गोइंग टू फील कि मेरा अच्छा हार्ट रेट बहुत हाई हो गया, अभी मैं बैठ के थक शांत ये करता हूँ मैं, लाइक ब्रेक लेता हूँ. आई कैन वॉक इन माई हाउस ऑल डे लॉन्ग Hmm. without even having one drop of sweat. Yeah. But when you are on top of Everest, walking 10 steps, you have to take a break. It's that hard. Everything takes efforts, extra Everything takes effort. effort. Everything. Wonderful. I did not know about all of this until I saw everything. I knew people climb Everest. It's Right. tough, but itna tough. And then the ladder part came and I was like, abhi ladder bhi hai. Luckily, ladders are very, very low on the mountain, so it's not so bad. Like your body still has enough energy to cross the ladders and climb the ladders. On the north side, Tibet side में उन्होंने एक लंबी 25 फीट की लैडर लगाई है 28,700 मीटर पे फीट पे. Wow. 28,700 भी नहीं, 28,800 फीट पे होगी शायद. दैट इज द किलर. मतलब मैंने वो लैडर देखी ना, मैं इतना थका हुआ था ना, और मैंने वो लैडर देखी ना, लिटरली 2 मिनट के लिए ना मेरा सारा मोटिवेशन मर गया था. आई एम लाइक यार चलो घर जाते हैं यार, छोड़ो यार, एक बार तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुका हूँ, दूसरी बार नहीं हुआ तो ठीक है यार, कुछ होने नहीं वाला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन आई लाइक नहीं 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 यार, दिस इज इट. आई एम लाइक 20 minutes away from the top and I can't give up now. And you just like make up your like just relax a bit and then you climb. I tell everyone one step in front of another, karte raho. And by the time you reach the top and then suddenly अरे यार top पे पहुंच गया. So I think that's even with any dream in your life, just one step in front of another, बस करते रहो. Exactly. That's wonderful. So now we'll come to the travel part. So any whatever places that you might have traveled or being in from India to California, any cultural difference, any bizarre moments or funny moments that you had traveling? Any cultural differences. Look, नेपाल का तो मैंने बहुत कवर किया. This year, earlier this year, before COVID, I was in Argentina and I was Okay. climbing the tallest mountain in Argentina. तो वहाँ का थोड़ा कल्चर देखने मिला, वहाँ का थोड़ा माइंडसेट देखने मिला. They operate very differently than how Nepal operates. Like
वो लोग ने माउंटेन इतना क्लीन रखा है ना, इतना क्लीन रखा है, यू इवन कैन नॉट पुट अप अ टॉयलेट टेंट एनीवेयर. ओहो. मतलब तुम्हें तुम्हारा टॉयलेट, इवन नंबर टू, यू हैव टू डू योर ओन नंबर टू in a like a plastic bag, and carry that plastic bag with you, and you have to bring back down that plastic bag with yourself. Like, Okay. they are very strict about it. So it's so amazing that wo log, they are, keeping their mountain clean, they are keeping the Exactly. surroundings clean, they are keeping the glacier clean. क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना, that इतने सारे लोग आ रहे हैं ना वहाँ, पहाड़ पे बहुत लोग होते हैं, because it's the tallest mountain in the southern American continent. There's too many people out there. And if imagine if everyone starts shitting on the glacier, and then वो जो पानी का source Yeah. भी है वो glacier, तो by the time हाँ. the पानी नीचे आएगा, तो it will, I mean, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा river है, तो हाँ, पर फिर भी. so I mean they are amazing in that Yeah. sense. And initially it's a little tricky, but once you get a hang of it, it's not so difficult. I personally feel that this should be applied to every part of the world and all the mountains of the world. Exactly. That's a good practice. क्योंकि एवरेस्ट पे काफी कचरा है, and Hmm. they really need to work hard. um, and there has been a lot of work that has happened, believe me. In last 10 years that I've gone there, it has improved dramatically. At least on the trail to Everest base camp, you will not see a wrapper on Hmm. the trail. सब जगह उन्होंने कचरे का डब्बा बना के रखा है, and they are मतलब clean होते रहता है. And luckily on even in Argentina, this was like really amazing. um, it, again, ये cultural difference नहीं था, but I just thought this was like No, a no, that's a really good one. a point that I think if anyone is like really tuning in, they want to become climbers, I think this is something that they can start practicing, where Exactly. you don't leave any trace. मतलब अपना कचरा भी मत छोड़ो, ऑर्गेनिक वेस्ट भी मत छोड़ो, नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट भी मत छोड़ो, जो भी तुम जनरेट कर रहे हो वो अपने साथ लेके उस एरिया से निकलो. Yeah, true. So I've been to deserts, so I did not know abhi Everest mein this is a good point. This is happening in Everest as well. कैसा होता है ना कि इट्स नॉट लाइक ऑन पर्पस गंदगी कर रहे हैं. कभी कभी 26,000 वाले फीट के कैंप पे गए, वहां टेंट पिच कर दिया, अभी तुम नीचे उतर रहे हो, तुम बहुत थके हुए हो, और तुम्हें Hmm. वो कैंप स्किप ही कर देना है. Hmm. तो कभी कभी कैसा होता है ना कि शेरपा वो टेंट निकालता ही नहीं है, फिर वहीं रहने देता है. फिर वो टेंट क्या होता है, वहां बहुत हवा चलती है, तो वो टेंट फट जाता है, टूट जाता है, और फिर उसका पूरा कचरा बिखर Okay. जाता है. Yeah. सो अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इज वी इंसेंटिवाइज द शेरपा दैट यार तुम एम्प्टी ऑक्सीजन बॉटल नीचे लेके आए ना तो तुमको एक्स्ट्रा $100 देंगे, तुम एक्स्ट्रा टेंट नीचे लेके आए ना तो तुमको $50 देंगे. सो Hmm. ऐसे इंसेंटिवाइज करके अभी काफी पहाड़ वो क्लीन हो रहा है, हाँ. काफी कम अभी कचरा हो रहा है. और एवरी ईयर देयर इज अ क्लीनिंग एक्सपीडिशन भी जो जाता है और वो कचरा क्लीन करता है उस माउंटेन पे से. तो अभी ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स थिंग्स हैव बिकम बेटर, एंड इट इज Yeah. improving as we go further. That's a good thing. That's a good thing. So, any other experiences that you might have in terms of food, culture, anything? कुछ भी सी जैसे. फूड तो मैं वीगन हूँ, तो Hmm. जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे वीगन फूड ढूंढना पड़ता है. हाँ. And again, with all the advances in the world in terms of technology, and in terms of social media, and in terms of just the world growing and vegan movement also growing, Hmm. vegetarian and vegan food is today available everywhere in the world. अभी मैं शामोनी में था, फ्रांस में, where we were taking part in a race. Believe me, every restaurant there had either a separate vegan menu or at least 4 or 5 vegan items in the menu. Wow, that's a So good thing. Chamonix in France, it's a mountain town. I don't even think many vegans would be going there, and yet they had so many vegan options. So things are improving across the world. I just think that people who are visiting or traveling, they just need to plan better. If you have certain restrictions in terms of your diets and everything, just plan better. Research about those places, research about restaurants, research about grocery stores, and a lot of those things before you go there, and you'll have a much better experience. Exactly. तो अभी जैसे कोविड चल रहा है, so COVID has Right, affected a lot of people in a lot of ways. Now you right, being a mountaineer and your dream being, fulfilled, like you wanted to be at the top of the Everest and you were. So right. अभी
What next? I'm using this time to instead work on my nutrition, instead work on my fitness a lot Yeah. better. इतना मुझे डाउन टाइम कभी मिलने नहीं वाला था. Hmm. मेरे आवर्स भी थोड़े कट हो गए काम पे, क्योंकि लोग हर कंपनीज भी इम्पैक्ट हुई है, तो कंपनीज भी कोई वेज ढूंढ रही है कि हाउ दे कैन सर्वाइव इन दीज टाइम्स. तो मेरे आवर्स कट हो गए, व्हिच मींस दैट आई हैव एक्स्ट्रा आवर्स टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. मेरी बेटी अभी 10 महीने की है, तो शी इज ग्रोइंग अप, सो आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विथ हर. Yeah. Otherwise, I would be climbing some mountain or working, and I would have now not gotten to spend all this time with her. Yeah. So I'm, looking at positives. I'm getting time to spend with my daughter. For the first time in 10 years, I have taken a step back and I've looked at my fitness. I've looked at my nutrition. I've changed the way I'm doing things. तो वो मैंने change किया है. That's all I can say. Yeah, definitely. Any last message for our viewers and listeners? Um, I think it has to be again around two things that I said during the podcast. One definitely has to do with not giving up. So अपने लाइफ के एवरेस्ट में बहुत सारे challenges और अड़चने आएंगी. Believe me, अगर नहीं आ रही है, that means that is maybe you need to redefine your Everest at that point. Yeah. If it's too easy, maybe it's not Everest. Hmm. And it's not necessarily bad कि तुम्हारा dream कोई easy है. It's okay sometimes to have easy dreams in life. Like right now in the pandemic, maybe it's just better to set easy dreams so that Yeah. you are able to achieve them and maybe just feel good and maybe just keep progressing. But kabhi I think you'll need a challenge. You'll need to go outside your comfort zone because that's where the growth and the learning will happen. तो जब भी आप अपने एवरेस्ट जर्नी पे हो तो बहुत डिफिकल्टीज फेलियर्स आएंगे. आई थिंक the the main thing to do would be to stay focused, to stay positive, learn from it and not give up, and बस आगे बढ़ते रहना है, one step in front of another. Exactly. Before I end this, any one story that you might want to share from your Everest that is scary or something interesting? Scary and interesting. Scary वाला last year हुआ था एवरेस्ट पे ही. Okay. And I wanted to, one of my dreams has been to shoot Everest with the Milky Way Yeah. and shoot a time-lapse video of the whole thing. Okay. And the thing is that Everest का north side के base camp पे there are a lot of lighting. तो Yeah. there would be too much light pollution, which means that मेरा shot अच्छा नहीं आता. Hmm. So I would have to trek away from the base camp, climb a small hill, and उस hill पे I would have to pitch a tent and पूरा night spend करके अकेले वहां मुझे shoot करना पड़ता एवरेस्ट को. मुझे अच्छा मेरा shots मिल जाता. हाँ. Now ये प्लान की भनक सब शेरपा लोगों को लग गई थी कि मैं ये ऐसा करने वाला हूँ. एंड शेरपा लोग अपने आप में प्लानिंग कर रहे थे. वो एक येटी का मास्क लेके आए थे. अच्छा. एंड वो लोग येटी का मास्क पहन के दे वर ऑल गोइंग टू ट्रैक अप, 11-12 लोग, और वो लोग मुझे मतलब मेरी बैंड बजाने वाले थे वो लोग. I was literally going to be in a very very difficult condition जहां से मैं शूट कर रहा था, कि बहुत ठंडी थी और मैं अकेला था लिटरली. इट वाज लाइक 400-500 फीट अवे फ्रॉम द बेस कैंप और पिच डार्कनेस थी. ठीक है, मतलब इतना अंधेरा हो जाता है ना कि आप अपने आप को भी नहीं देख सकते हो. इतना अंधेरा हो जाता है वैसे एरियाज में मैं था. सो आई रिमेम्बर मैं वहां गया और मतलब छोटे तिनके जितनी भी आवाज आती थी तो मेरी फट जाती थी. and I'm like कोई आया. I'm shooting but I'm like कोई आया. And then no one came that night, but the next day when I went down, my Sherpa like told me the whole story that ऐसे Sherpa लोग आने वाले थे. I'm like, man, तुम लोग आते तो मेरी बैंड बच जाती पूरी. मतलब मुझे हार्ट अटैक आ जाता 100%. तो वो बहुत ही मतलब it was good fun story from last year. From वो रात कैसे निकाली मुझे पता है. So they were coming to scare मैं ना you. सो पा रहा था, मुझे नींद भी आ रही थी, पर मुझे शूट भी करना है, मुझे मिल्की को भी ट्रैक करना है, मुझे एवरेस्ट को भी ट्रैक करना है, मुझे स्टार ट्रेल भी ट्रैक करना है, सब कुछ करना है. बट मुझे नींद भी आ रही है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, बट मैं डर भी रहा हूँ और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, तो तुम कुछ देख भी नहीं पा रहे हो अच्छे से. It was crazy. It was good fun. Yeah. These are, one of the best moments, like when you are at Everest. Especially And भूत की स्टोरीज तो ना पूरे टाइम चलती रहती है बेस कैंप पे. तो
that's also like creating an atmosphere that 3-4 दिन से तुम भूत की story सुन रहे हो, then suddenly you have to go and pitch a tent 500 meter away, एक सुनसान जगह पे, and then so it was good fun anyway. Yeah, that must have been wonderful. All right, so this is the end of the interview, Kuntal. It was so much fun listening to your, experiences, and you are actually a very inspirational person, and also very kind, to be honest. Like caring a lot about a lot of things and spreading a good message to, the world. Thank you so Trying to much. do my bit and hoping that someone else just gets inspired from this and does the same. Yeah. And that keeps, I got inspired from someone by seeing someone, by getting inspired by someone, and I hope someone does that from me and someone else from that person, and that this just becomes like a big Mexican wave, and Yes. we can just spread this. We hope so too, that people do gain a lot of information, insights, and and start practicing bit by bit, but start practicing being vegan if possible. It would be wonderful. So Yes, and if anyone has any questions, you can always reach out to me. I'll be more than happy to help. yeah, definitely. I'll be providing all the links to you and also your Sherpa Mingma. Sure, Mingma, right? sure. Tenzi. Mingma Yes, Mingma Tenzi's. Tenzi. Yeah, I'll provide his link as well because he also was a big, part of this journey that Kuntal Yes, achieved. yes, he was. Yes. So, yeah. Thank you so much, Kuntal. It was a wonderful session. Thank you so much for being with us. Thank you, thank you. Really appreciate you inviting me. Oh, it was my pleasure. I loved it. So, this was Kuntal's inspiring life journey so far and some amazing travel experiences. And I hope you got some amazing insights and motivation from this episode. Thank you so much for giving your precious time to this podcast. If this episode was inspiring and insightful, please do drop a comment on my Instagram and YouTube at the rate my boho voyage. Also, do check out my YouTube channel at the rate my boho voyage for the video version of this episode. Please do subscribe and give a 5-star rating and hopefully write a review for Inspiring Explorers. Also, please don't forget to connect with me on Instagram and YouTube. Drop me a hi or send me a comment so that I know we are in this journey together. This is Meenakshi Srivastava, your host for Inspiring Explorers, saying goodbye. See you next week with an amazing, inspiring interview. Till then, take care.